we can discuss about the currents or the dynamics of oceans. Dynamics of oceans includes three kind of movements. One is ocean currents, second one is waves, and third one is tides. But in our syllabus, there is this, nothing deal with tidal actions. But we have to study these currents and the wave motions. So currents, actually it covers the whole part of ocean. Ocean का जो vertical upper top to bottom and from north pole to south pole. If we take the extension of the ocean, you can see the currents. And coming to the wave motion, usually this happens near to the coastal areas. And even the tides usually occurs at almost all the region, but usually it is visible in tropical regions and is visible mostly in the coastal areas. It can be identified at that particular portion. So today what we are going to discuss is about the currents, and tomorrow we can discuss about the wave actions. So what is this current stands for? Actually, it is the movement of large amount of water from one region to another region. जैसे extreme है, कैसे होगा? वो पहाड़ से शुरू होकर it will end to the ocean. जैसे within the ocean, ऐसा होगा कुछ पानी, बहुत ज्यादा पानी एक जगह से दूसरे जगह पर, just like a stream, it will move because of different factors. That movement of water, this bulky water, we can say it as currents. And usually it happens on a particular direction. There will be single direction for the currents to move. And it is always continuous, and we can predict it from where to where it will move. Based on the influencing factors, we can predict it. And I said it has two kind of movement. One is horizontal movement, that is the latitudinal movement. Also it has from one area to second area, it will move. On the other side, it has vertical movement from top to bottom. Also it will move. The vertical movement of the currents of this water body, or as we commonly say it's as current, is called the upwelling or the downwelling. Upwelling means नीचे से ऊपर जो currents का movement है, that is vertical movement. We can say it as upwelling. And in opposite, from top to bottom, that we can say it as downwelling of water. But when it is horizontally moving, we can clearly say it as the currents. So all these are actually part of currents. ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और horizontal, this horizontal इसका movement है. Then also we can say these are current. But in common, in general, we will say the movement upward and downward movement as upwelling and downwelling respectively. And or if it is horizontal movement, we can say it as currents. Usually it travels अभी ऐसा है, these are equator, mid latitude and the polar region. तो यहाँ से equatorial region से ऊपर जाएगा, ऊपर से polar region से ऊपर जाएगा. तो ये क्या है? यहाँ temperature ज्यादा है, it can carry temperature to this area, and this is cold temperature here. तो cold temperature को इधर से लेके इधर आ सकते हैं. तो it can distribute temperature also from one area to second. When we studied about the salinity, we said it can carry salinity from one area to the second area. So that is the relevance of a current. It can carry one thing, especially the dynamics especially the salinity and temperature from one area to another. It can carry these currents. So, and as I said, these are like streams in ocean. ऐसे है, एक अलग चीज होगा. Remaining water अभी constant होगा, नहीं है, तो उसका उतना ज्यादा movement नहीं होगा. At the same time, इसका बीच में जो bulky वाटर होगा, वो
ऐसे stream जैसा जाएगा. That is called actually the currents. So what are the factors affecting these currents? How these currents move? The prior and important factor is the density difference. Water move from high density area to low density area. तो जहां पे हाई डेंसिटी है एंड जहां पे लो डेंसिटी है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम हाई डेंसिटी एरिया टू लो डेंसिटी एरिया. When we studied about the wind, I told you the wind will move from high pressure area to low pressure area. So that is how the wind moves. Like the same, the currents move from high density area to the low density area. Increase in temperature. ये डेंसिटी का कैसे इन्फ्लुएंस होगा? When the temperature increases, that means where there is too much of insulation, insulation होगा, नहीं तो धूप ज्यादा होगा, उसी जगह पे there will be temperature increase in temperature, उधर से temperature ज्यादा होगा. So when the temperature increases, there will be increase in the volume. पानी का वो volume बढ़ जाएगा. And because of the same, there will be increase in the density. So this is the relationship. Temperature, continuous insulation. That means usually it's smooth equatorial region में there will be currents because उधर ज्यादा insulation है, नहीं तो उधर temperature ज्यादा हुआ है. इसके वजह से क्या हो गया? There will be increase in volume. And on the other side, there will be increase in the density. Second one is prevailing wind. The wind will pull surface water with them, creating currents. Abhi, when we studies about the wave, we can say that abhi जो पानी है, पानी के ऊपर से wind blow होगा, तो क्या करेगा? The wind will have friction. इसके साथ friction होगा. तो ये पानी को there will be tendency to move. असली में it will provide energy to the water to move. So there will be actually it is a energy transition. तो ऐसे अभी ज्यादा wind होने से क्या होगा? Instead of waves, ये बहुत ज्यादा पानी को ये एक साइड से दूसरे साइड में लेके जाएगा. नहीं है तो when there is density difference and the wind, when the currents are moving from high density area to low density area, this wind will accelerate the movement. वो इसको तो support करेगा, ये movement को ज़्यादा support करेगा. Then the third one is rotation of the earth. Rotation of the earth, जैसे where we studied about the monsoon के बारे में जब पढ़ा है, I said in the north pole, anything that is moving will reflect to has a tendency to move towards its right, and its left side it has a tendency to move towards its left. ऐसा एक movement है. Like the same, the currents also will turn to its right in the northern hemisphere, and on the other side the current will move towards its left in the southern hemisphere because of this Coriolis force. And Coriolis force is mainly because of the rotation of the earth in its own axis. वो earth का अपना axis का वो rotation के वजह से the thing or the moving material, especially the winds and currents, will deflect to its right in the northern hemisphere and deflects to its left in the southern hemisphere. And fourth one is the gravity. Gravity causes the more dense water to fall, pushing away the less dense water, which shoots sideways and rises. अभी हम current के बारे में बोल दिया तो I told you there is horizontal movement as well as the vertical movement. ये दोनों movement उधर है. Vertical movement भी होगा, horizontal movement भी होगा. तो ऐसा है when there is gravity, वो gravity होगा नीचे pull करेगा पानी को, तो इसका density ज्यादा होगा, तो ये ऊपर वाला पानी that will come down. वो density जिसका ज्यादा है वो नीचे आ जाएगा, and the lighter one moves.
लाइटर डेंसिटी वाटर क्या होगा, वो दोनों साइड पे इसका मूवमेंट होगा, यहाँ से दोनों साइड में। तो क्या हो गया, देयर इज ए पुल, देयर इज ए सॉरी, ये तो नीचे का एक पुल होगा, ये क्या करेगा, इंस्टेड इट विल पुश द वाटर, जो नीचे का जो पानी है उसको तो अपवेल करेगा, and at the same time यहाँ ज्यादा पानी ऐसा आने से this will start moving on two directions, so that will start the horizontal currents, and there is, it will also support the vertical movement, upwelling or downwelling का भी इसका influence है। that is how the gravity ऐसा है, gravitational attraction, वो अर्थ सरफेस नहीं है, तो अभी वो अर्थ का अंदर से जो अट्रैक्शन हो रहा है इसके वजह से इसका डेंसिटी, ज्यादा डेंसिटी वाला चीज नीचे आ जाएगा, एंड जो पानी, जो वाटर बॉडी है इसमें डेंसिटी कम है, वो साइड तक ऊपर जाएगा, साइड में जाएगा, एंड इट विल मूव लैटरली, वो लैटरली इसका मूवमेंट हो जाएगा। दैट इज हाउ द ग्रेविटी इन्फ्लुएंसेस दिस ocean currents. And another one is horizontal pressure and gradient forces. This is mainly, it says about the density itself. तो यहाँ कैसा है, horizontal variation in temperature and salinity cause the horizontal pressure gradient to vary with depth. तो यहाँ क्या है, टेम्परेचर ज्यादा हो गया एंड salinity ज्यादा हो गया, तो इंक्रीज इन salinity एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसका मतलब है इंक्रीज इन डेंसिटी। तो ये क्या हो गया, तो बिकॉज ऑफ द सेम कॉज द हॉरिजॉन्टल प्रेशर, दोनों साइड में उसका हॉरिजॉन्टल प्रेशर होगा, डेंसिटी एक साइड में जहां ज्यादा है वो दोनों साइड में इसका हॉरिजॉन्टल प्रेशर डाल देगा, एंड दैट विल कॉज द मूवमेंट ऑफ currents. And finally the frictional force, the movement of water through the ocean is slowed by this friction with the surrounding fluids moving at different velocity. तो ये तो ऐसा है, बाकी सब that is a factor which accelerate the current movement, but here friction instead what it is doing, it will decelerate, it will reduce the velocity of the currents. That is how the friction influences. So these are the major factors which influence. Density हो गया, density ज्यादा होने से temperature ज्यादा होने से volume increase होगा, volume ज्यादा होने से density increase होगा. When there is high density, the water will move from high density area to the low density area. Instead of prevailing wind क्या करेगा, it will pull, it will act as a supporting force for the movement of currents, and the rotation force is rotation of the earth क्या करेगा, it will help in deflecting, इसका direction को control करेगा, northern hemisphere में right side में, and in the left southern hemisphere में it will deflect towards left. तो ऐसा हो गया. Then the gravity वो upward and downward movement का इसका support करेगा. Horizontal pressure gradient is also same like the density, same है, दोनों lateral pressure इसमें देगा, वाटर का मूवमेंट में देगा. एंड फाइनली द फ्रिक्शनल फोर्स कैसे करेगा, इट विल reduce the velocity of the currents. This is how the major factors influence the movement of the ocean currents. Now let's see the type of ocean currents. So we have, I told you there is two kind of currents already. There is horizontal currents and the vertical currents. Horizontal current होगा अपर सरफेस में होगा, वो लोअर सरफेस में भी horizontal currents होगा. And there will be vertical currents, that is one is वो जो ऊपर जाएगा that is upwelling currents, and जो नीचे आएगा that is downwelling. तो ऐसा एक common currents है. And again this ocean currents has been divided into many categories. So based on the depth, the surface, the ocean currents has been divided into two. One is surface current and second one is deep water currents. तो surface current होगा, अभी ये है ocean basin, यहाँ तक पानी है, तो surface current होगा in the surface, जो top layer में जो पानी का bulk पानी का जो movement है,
it is visible from the top itself. वो ऊपर से देखने से भी you can feel the water is moving. A stream is moving over the surface of the water, of the ocean water. ऐसा movement इसका हो रहा है. ये कैसे होगा? This is mostly driven by global wind systems. When we have studied about the global pressure belt and the wind system, we discuss about the tropical easterlies के बारे में बोल दिया है, then the two westerlies के बारे में बोल दिया है. वो ये सब these are actually the global wind system है. तो tropical area, equatorial area, that is low pressure area, then subtropical high, then subpolar low, then the polar high. तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से subtropical area से tropical area में जाएगा and it will deflect towards its right. यहाँ से ऐसा इसका movement होगा. And यहाँ क्या है? This is low pressure and this is high pressure area. तो high pressure से यहाँ से इसका deflection इसी direction पे होगा. So this is actually what side is this? This is eastern side and this is western side. So eastern side से जो आ रहा है that is called the easterlies and western side से eastern side में जो जा रहा है that is westerlies. So based on this movement, वो sea का जो wind का जो movement है इसके वजह से there will be movement of current alpha same direction में. That kind of movement is called the surface currents. इसका एनर्जी कहाँ से मिलेगा? ये इसका तो wind will move from high pressure area to low pressure area. So high pressure and low pressure is created by the change in temperature. ज्यादा टेम्परेचर कहाँ से मिलेगा? जहां पे ज्यादा इंसुलेशन है, जहां पे ज्यादा सोलर रेडिएशन आता है. It's based on the sun's energy. Sun's energy ज्यादा है तो उधर low pressure area होगा, तो wind start blowing from high pressure area to this low pressure area. So same way the currents also move from that particular high pressure area to this low pressure area तक. इसका movement होगा. It covers, so that is why it is called this particular system is fueled by energy from the sun. इसका कहाँ से ये एनर्जी मिलेगा? This got its energy from the sun, and it's constitute about 10%, almost 10% of the water in ocean. वो ocean current होता है almost 10% का movement this surface water के वजह से, surface currents के वजह से होता है. And the water has the upper 400 meter of the ocean. तो अपर जो पानी का ऊपर से नीचे तक 400 मीटर तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये वाटर मूव होगा. तो उतना सा एक्चुअली आई सेड currents are not a small stream, it is a big stream. तो इसका डेप्थ हो गया 400 मीटर, ऑलमोस्ट 400 मीटर तक पानी को ये लेके जाएगा. That kind of currents we can see it as the surface currents. And second one is deep water currents. This is happens when difference in water density resulting from variability of water temperature and the salinity. यहाँ कैसे है? From high density area to low density area there is movement. And ये density को कौन control करेगा? The presence of temperature and the presence of salinity. When there is high pressure, when there is high salinity, there will be high density. So क्या होगा? The current will move from high density area to the low density area. So this happens usually at deep water currents. So 400 मीटर तक surface current होगा जो इसके नीचे होगा, because उधर तो उतना ज्यादा डायरेक्ट इंसुलेशन और विंड मूवमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं होगा. जो पानी के नीचे है तो उधर विंड मूवमेंट का कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होगा.
It is because of this variation in temperature and salinity where the currents occurs or currents moves. Because of the same, it got its name thermohaline circulation. Thermohaline circulation. ये पूछ सकता है, what do you mean by thermohaline circulation? So it is the movement of currents at deep water from high density area to low density area because of the variation in water temperature and water salinity. Temperature means thermo and salinity halenes. We have studied about yesterday also. I told you isohalenes के बारे में. Area having same salinity. So halene means salinity का एक influences halene में. So ये हो गया. When it's combined, there is thermohaline influence. And it occurs almost 90% of the ocean current. जो ocean currents होता है, ocean water का जो movement होता है, वो 90% control करेगा this deep water currents. And the remaining only 10% is by the surface currents. So based on the depth, we can divide the area into the sea currents, ocean currents into two, surface current and the deep water currents. Again, it comes if the currents can be divided into two based on its temperature. Temperature होने से there is two kind of temperature, warm currents and the cold currents. Cold currents क्या होगा? The current has low temperature, very low temperature, almost near to the freezing point. And warm temperature is where the water is warm or the temperature is high. तो ये कैसे होगा? It's very simple. अभी इक्वेटर है, पोलर रीजन है. जो करंट्स आएगा पोलर रीजन से नीचे, that is usually cold currents. That is why it is saying that it comes from high latitude and mid latitude areas. जो polar region से जो currents आएगा, that is usually cold currents. जो equatorial region से जाएगा, that is usually warm currents होगा. The currents which is near to equator and the tropical regions shows a warm water, presence of warm water or warm temperature is called the warm currents. On the other hand, the currents which is coming from the cold region or the Arctic region or the Antarctic region, we can say it as the cold currents. So based on temperature, we can divide the water currents into two. One is cold current and second one is warm current. If you look at this picture, you can see जो आता है polar regions के side से, that is always blue color. Blue color represents the cold current. And if it is moving equatorial region से जो जा रहे, that is always red color. So it is actually the warm currents. This is how the currents are distributed. One is surface currents, second one is deep water currents, third one is cold currents, and the fourth one is warm currents. Now we can look at the currents of major oceans. We know that we have three oceans: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, and Indian Ocean. We have Arctic Ocean and the Southern Oceans, but usually when we study about the currents, the questions will ask from these three oceans, that is Pacific Ocean, Atlantic Ocean, and the Indian Ocean. So how these currents are moving? So before going for that, you have to understand certain things. तो current हो गया एक जगह से जो दूसरा जगह पर जाने वाला पानी का एक बहुत ज्यादा पानी का एक स्ट्रीम है. So there is different currents. पहले होगा equatorial region में there will be equatorial currents. अभी जो भी whether it is Pacific Ocean, whether it is Atlantic Ocean, whether it is Indian Ocean, there is equatorial currents.
एंड इक्वेटोरियल करंट्स का कैरेक्टरिस्टिक होगा दे आर हॉट करंट और द वार्म करंट्स होगा, बिकॉज दिस इज इन इक्वेटोरियल रीजन और द ट्रॉपिकल रीजन में है. It is moving from or it is starting from that particular area, so we can say it has warm currents है and there will be two equatorial currents for all these. अभी ये दोनों इस साइड पे जा रहे हैं, तो यहाँ एंड एक कॉन्टिनेंट होगा, कुछ एंड होगा सी का, तो क्या होगा, ये इधर हिट करेगा एंड यहाँ से क्या होगा, इस पानी को वापस लाना है ना, तो इधर से ये उल्टा जाना शुरू करेगा. ये दोनों करंट यहाँ आकर ये उल्टा जाएगा. दिस करंट्स जो इसके बीच में, जो इक्वेटोरियल करंट्स के बीच में जो जाएगा, दैट इज कॉल्ड काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स. दैट इज कॉल्ड द काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स. तो इक्वेटोरियल करंट हो गया एंड द काउंटर इक्वेटोरियल. इक्वेटोरियल करंट को जो वार्म करंट हो उसको काउंटर करने के लिए, उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए देयर इज इनवर्स मूवमेंट ऑफ वाटर. अभी नॉर्थ टू साउथ आ रहे, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट आ रहे इक्वेटोरियल करंट, देन देयर विल बी फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. दैट इज कॉल्ड काउंटर इक्वेटोरियल करंट एंड दिस इज अवेलेबल फॉर ऑल दिस ओशंस. पैसिफिक ओशन में काउंटर इक्वेटोरियल होगा, अटलांटिक ओशन में होगा, इंडियन ओशन में होगा. So if you get a question regarding the currents of Pacific Ocean, current of Atlantic Ocean, current of Indian Ocean, you can directly go for these three. So start from equatorial current. There will be equatorial current from moving near to the equatorial region, and there will be counter equatorial current also. And towards the south area, there are always some wind drift. साउथ विंड ड्रिफ्ट और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ऐसा कुछ विंड का ड्रिफ्ट होगा. ड्रिफ्ट मीन्स ये तो ऐसा है, ये फ्लोटिंग है. करंट हो गया वो नीचे से जो जा रहा है, पानी का जो मूवमेंट है डीप वाटर में थी, लेकिन यहाँ क्या है, विंड ड्रिफ्ट है. तो यूजुअली दिस हैपेंस ऑन द सरफेस. सरफेस का जो एरिया है 400 मीटर तक जब हम बोल दिया है, सो इट इज लाइक दैट. इट विल जैसे गाड़ी हम लोग ड्रिफ्ट करता है ना, ऐसे ऊपर से ऐसा स्किड करके ये तो ऊपर से जाएगा, ऐसा मूवमेंट है. सो देयर विल बी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट. अभी आप देखने से यू कैन सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रिफ्ट हियर. सो वेस्ट विंड, वेस्टर्न साइड में से आ रहे तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बोलेगा. अभी आर्टिक रीजन में अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलेगा, अटलांटिक रीजन में अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलेगा, पैसिफिक रीजन में पैसिफिक ड्रिफ्ट बोलेगा. बट एट टॉप एंड बॉटम देयर विल बी wind drift. Usually it happens not near to the poles, not near to the equator. It happens mostly between these two. Equator में नहीं है, polar region में. Actually in mid latitudinal areas you can feel the wind drift. तो इतना सा ये 5 currents है, that is common. Wind drift होगा, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट होगा, नहीं ये तो एक पर्टिकुलर नाम है, विंड का ड्रिफ्ट होगा. इक्वेटोरियल, 2 इक्वेटोरियल करंट्स होगा इसमें एंड काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स होगा. सो ये याद रखना है. देन कम्स वी कैन गो टू डिटेल इन ईच ऑफ दिस ओशंस. सो दिस इज पैसिफिक ओशन करंट. पैसिफिक ओशन करंट, लेट इट बी happens in Pacific Ocean. तो Pacific Ocean दो साइड में होगा, नॉर्थर्न साइड में होगा, सदर्न साइड में होगा. नॉर्थ पैसिफिक करंट होगा, साउथ पैसिफिक करंट होगा. अभी जो इसके अंदर जो रिंग है, ऐसा इफ यू लुक एट दिस पिक्चर यू कैन सी अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर हियर. दैट इज एक्चुअली कॉल्ड गियर, GYRE. दिस सर्कुलर मोशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड द गियर. यहाँ बहुत कुछ गियर you can, it is visible here. यहाँ पे you can see this kind of gear. So when it is happened near to the tropical region, we can say it as tropical or northern side. We can say it as, usually it happens in mid latitudinal area. Tropical का just ऊपर होगा, so that will be subtropical region. So if it is happening in northern area, we can say subtropical north gear.
If it is happening in Pacific Ocean, we can say it as North Subtropical North Pacific gear. Or if it is happening in southern side, we can say it as Subtropical South Pacific gear as a rotational movement. So let's start from equatorial currents. यहाँ if you look, you can see the movement. ये है equator. यहाँ से equator जा रहा है directly. ऐसे you can see equator more. So if you look, you can see the currents. यहाँ से जा रहे हैं. ये current का नाम है equatorial current. That is north equatorial current because this is in the northern hemisphere. So we can say it as north equatorial currents. So ये कहाँ से शुरू होता है? तो this is actually साउथ अमेरिका है. साउथ अमेरिका के साइड से इट इज मूविंग टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया एंड दिस एशिया का जो पोर्शन है उसी साइड में इसका मूवमेंट हो रहा है. तो दिस इज कॉल्ड नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स. तो ये ई से आ रहा है. तो एट द सेम टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर यू कैन सी देयर इज इक्वेटोरियल करंट इन द सदर्न साइड आल्सो. So that is called south equatorial current. So there is two kind of movement. तो बस दिस इज यहाँ से यहाँ इसका मूवमेंट हो रहा है. तो दिस इज ईस्टर्न साइड एंड दिस इज वेस्टर्न साइड. इफ यू लुक फ्रॉम दिस साइड, दिस इज वेस्टर्न साइड एंड दिस इज ईस्टर्न साइड. तो वेस्ट ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड तक इक्वेटोरियल करंट आ रहा है. एंड इफ यू लुक एट द सेंटर यू कैन सी arrow pointing towards the eastern side at the middle area में ऐसा मूवमेंट है. So that we can say it as counter equatorial current. So for Pacific Ocean, there is north equatorial current and there is south equatorial current, which is moving from eastern side to western side. And there is a counter equatorial current between these equatorial currents that is moving from western side to eastern side. And the remaining water, ये पानी ऐसा ऊपर जाकर जापान, दिस इज जापान साइड ना, तो दिस इज जापान. तो जापान का इस साइड में आने से इक्वेटोरियल करंट को अपना नाम मिलेगा कुरोशियो करंट. कुरोशियो करंट. This is also warm current है because ये this is going from equatorial region. Equatorial region से जा रहा है तो इसका होगा this is actually warm current, that is Kuroshio current. When it is further moving, अभी जापान का जो अंदर से ये ऐसे जा रहा है तो इसे बोलेगा कुरिल करंट. नहीं ये तो you can see here this side में ओयाशियो बोल के एक करंट है जो ऊपर से नीचे आ रहा है. So that the same here you can see it is known as the Kural current. So this Oyashi current is the same that of this Kural current. That is actually the cold current है. If you look at this picture, you can see Pacific Ocean इसी साइड में Okhotsk का एक region है, Sea of Okhotsk. So it is also known as Okhotsk current. Okhotsk current होगा नहीं ये तो Kural current होगा इसी साइड में. And it is moving from polar region. Polar region से जो आ रहा है, so we can say that as cold current. And instead ये दोनों जगह से ये आ रहा है, तो Okhotsk current हो गया इसी जगह पे. And at the same time ये Kuroshio current, तो इधर से ये ठंडा पानी आ रहा है, यहाँ से गर्म पानी आ रहा है, तो यहाँ से मिक्स होकर, so there is mixing of these two current and this current further moving towards eastern side. ईस्टर्न साइड में आने से एक पोर्शन हो गया यहाँ से उल्टा ऐसा जाएगा. दिस इज एक्चुअली वार्म करंट है बिकॉज ये जो करंट है मिड लैटिट्यूड में जो ठंडा पानी भी मिक्स हो रहा है, फिर भी कंपैरेटिवली इस साइड में क्या है पूरा ठंडा है, लेकिन ये जो पानी आएगा वो एवरेज टेम्परेचर इसमें होगा. सो वी कैन से दिस एज ज्यादा टेम्परेचर, तो वार्म करंट होगा दैट इज मूविंग टुवर्ड्स अलास्का रीजन. दिस इज एक्चुअली Alaska. If you look at this map, you can see this area. यहाँ आ रहा है, यहाँ से ऐसा जा रहा है.
So Gulf of Alaska में ये आ रहा है. So that area, it is termed as the Alaska current. And the remaining warm current is moving towards equator again. And it is moving near, this is actually the Californian part. California, this is California, this is Alaska. So Alaska के side में इसे बोलेगा Alaska current, and when it's moving southward towards the equatorial region, it is known as the California current. So these are the major currents in the northern Pacific Ocean. Oyashio current और Okhotsk current बोलेगा, फिर Kuril current है, ये सब almost same area में है. And in general, if as the equatorial current is moving towards the Japan region, we can say it as Kuroshio current. All these are warm currents, but Kuril current is actually the cold current, and it is moving. अभी यहाँ से ये आ रहा है. And on the opposite other side, you can see different gear here. In polar region, यहाँ पे ऐसा एक तो rotation हो रहा है. If you look at, there is a rotation here. This rotation is called subpolar gear, and at this particular area there is two movements, that is North Pacific gear or subtropical North Pacific gear बोलेगा इसको. When it comes to the southern side of the Pacific Ocean, you have South Equatorial Current. South Equatorial Current ऐसे आएगा, एक थोड़ा सा अंदर घुस के इंडियन ओशन में आ जाएगा. Leave it there. लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया के, this is the western side of Australia and this is eastern side of Australia. तो जो current है जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड से जा रहा है, it is actually known as the Eastern Australian current. If you know the continent's name, you can understand, you can say the name of the current easily. तो ऐसा आ रहा है फ्रॉम ईस्टर्न साइड से, ऐसा साउथ इक्वेटोरियल करंट आ रहा है. एक थोड़ा जाएगा काउंटर इक्वेटोरियल करंट में जाएगा, बाकी तो आएगा ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया में. उधर इसका नाम है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट. एंड इट विल मर्ज विथ, जो नीचे से हम बोल दिया है देयर विल बी विंड ड्रिफ्ट होगा वेस्ट से, वेस्टर्न साइड से पूरा कॉन्टिनेंट्स के नीचे जो प्लेन ओशियानिक एरिया है, वेयर द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन मर्ज, there will be a large extension. If you look here, there is a large extension here. तो ऐसा एरिया में we can see the wind drift. उधर wind का drift होगा क्योंकि उधर कॉन्टिनेंट कुछ नहीं है, तो wind will blow freely. There is less friction also. Only water is there. तो उसका तो ऊपर से ऐसा पानी आएगा. That kind of movement we can say it as wind drift. So as it is coming from the western side, we can say it as west wind drift. So what happens here is this Eastern Australian warm current merges with this called west wind drift के साथ ये merge होगा, and it moves towards equator from ये South America, ये north से. This is actually the अर्जेंटीना आपको देख सकता है, चिली देख सकता है, एंड पेरू देख सकता है. So यहाँ से जो ऊपर जा रहा है, we can say it as Chile current. And when it is moving further, we can say it as Peru current. So based on the land, we can say different names. So usually in common, we will say it as Peru current, but at the north, you can say also Chile current also. So this will move like Chile current, then the Peru current, and finally it will end this to this South Equatorial current. This is the movement, oceanic movement, ocean current movement in the Pacific Ocean. तो southern side में जो gear होगा, that is subtropical South Pacific Ocean और Pacific gear बोलेगा. These are the major currents. You have to remember what are they. Equatorial currents 3 होगा, north, south, and the counter equatorial current. Again moving towards north, Kuroshio current, then Kuril current, then Alaska current, then California currents in the northern Pacific region. And in the southern Pacific region, what are they? South equatorial current, it moves towards the eastern side of Australia, and it is known as the East Australian current, which again merges with the west wind drift के साथ ये merge होगा, and it will move towards the eastern side again. And
उधर क्या होगा, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इसको ब्लॉक करेगा एंड इट विल अगेन टेंड्स टू इट्स लेफ्ट, लेफ्ट में टेंड होकर ये कैसे ऊपर आ जाएगा आज पेरू करंट, पेरू करंट और चिली करंट। ये अभी थोड़ा आगे करने इस स्मॉलर करंट से इक्वेडोर करंट भी इसको बोलेगा, बट वो सब पढ़ने की जरूरी नहीं है। जस्ट रिमेंबर दिस पेरू करंट, पेरू करंट अगेन इट विल मर्ज टू साउथ इक्वेटर। तो ऐसा एक सर्कुलेशन यहाँ, वो करंट का सर्कुलेशन इस जगह पे हो जाएगा। This is the current movement in Pacific Ocean. Then the next important ocean is Atlantic Ocean. Atlantic Ocean में कैसे है, एक साइड में आ गया नॉर्थ अमेरिका, दूसरे साइड में आएगा अफ्रीका, सॉरी दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, देन यूरोप, यूरोपियन region. So in between lies the Atlantic Ocean in the shape of S. S shape में जो ocean है, that is Atlantic Ocean. So like the same in the Pacific Ocean, if you look at this place also there is equator. Equator में क्या होगा, there will be north equatorial current and south equatorial current, and there will be, यहाँ नहीं दिखाया लेकिन there will be काउंटर इक्वेटोरियल करंट भी है in the middle area. तो जैसे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ऐसे मूव होकर it will comes to this Mexican, this is Mexico, Mexican area, this area. So यहाँ से ये उल्टा होकर ऊपर जाएगा आज गल्फ स्ट्रीम, because we know that this is गल्फ एरिया में, गल्फ एरिया है, ये गल्फ एरिया है, इसलिए इसे बोलेगा गल्फ स्ट्रीम बोलेगा। एंड गल्फ स्ट्रीम बोल के ये ऊपर आ जाएगा, दिस इज एक्चुअली वार्म करंट। एंड अगेन आई सेड अभी ऊपर क्या था, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट था, ऐसे यहाँ क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, एक ड्रिफ्ट है यहाँ, दैट इज मूविंग फ्रॉम, अभी न्यूयॉर्क से ये एक्सटेंड होगा लंदन तक, यूरोपियन साइड तक इसका एक्सटेंशन होगा वो करंट का। इन बिटवीन यू कैन सी लैब्राडोर करंट, एक कोल्ड करंट है, दिस इज कमिंग फ्रॉम लैब्राडोर एरिया एंड इट्स मर्जेस विद दिस वार्म वाटर। इफ यू हर्ड ऑफ न्यू फाउंडलैंड, उधर न्यू फाउंडलैंड करंट होगा जहां बहुत ज्यादा फिशेस है। व्हाई देयर इज टू मच ऑफ फिश, उधर पानी का मर्ज हो रहा है तो उधर बहुत ज्यादा आल्गे, देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ आल्गेस, ये आल्गे खाने के लिए फिशेस आ जाएगा। सो देयर इज इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ फिश रिसोर्स एट दिस न्यू फाउंडलैंड रीजन वेयर द लैब्राडोर करंट्स मीट दिस गल्फ स्ट्रीम। यहाँ तो यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ से इवन तो यहाँ से कोल्ड करंट आकर वार्म करंट में मर्ज करिए, लेकिन ये जो जा रहा है दिस इज मूविंग टुवर्ड्स पोलर रीजन में जा रहे हैं, तो पोलर रीजन में और ज्यादा ठंडा होगा, तो ये पानी का इवन तो देयर इज मिक्सिंग, इसमें थोड़ा गर्म और गर्म पानी होगा, सो दिस विल मूव अगेन एज वार्म करंट, दिस नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, दिस इज ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड से ये इधर होकर इस नॉर्वेजियन है ना, नॉर्वेजियन कंट्रीज है, ये नॉर्वेजियन कंट्री में इधर आकर ये स्प्लिट होगा, वन विल मूव टुवर्ड्स इक्वेटोरियल रीजन एंड अनदर मूव अलोंग द कोस्टल एरियाज ऑफ नॉर्वेजियन कंट्रीज as नॉर्वेजियन करंट, ये ऊपर जाएगा। अगेन दिस इज पोलर रीजन, पोलर रीजन होने से बहुत ज्यादा ठंडा हो गया तो क्या होगा, दिस वार्म करंट बिकम कोल्ड करंट एंड इट विल मूव as ग्रीनलैंड करंट होकर ये इधर ऊपर फ्लो करेगा। ऑन द अदर साइड दिस करंट जो यहाँ से स्प्लिट होगा, जो नीचे आ रहा है, तो ये वार्म है, दिस इज मच वार्मर, ये बहुत ज्यादा वार्मर है इस एरिया, तो ये पानी थोड़ा ठंडा होगा कंपैरेटिवली, सो दिस विल मूव अस कोल्ड करंट। सेम करंट यहाँ जाने से
यहाँ ज्यादा टेम्परेचर कम है तो ये गर्म पानी हो गया, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है तो ये ठंडा पानी हो गया। तो ऐसे आकर आज कैनरी करंट बोल के ये तो वापस आकर इक्वेटर में, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में मर्ज होगा। सो नॉर्थ वो एक सर्कल बनाने से दैट इज नोन एज नॉर्थ अटलांटिक गियर, ऐसा बन गया है। एंड एट द सेम टाइम इन द सदर्न साइड में, साउथ इक्वेटोरियल साइड में क्या हो गया, साउथ इक्वेटोरियल करंट, दिस इज ब्राजील, दिस रीजन इज एक्चुअली ब्राजील है, ऊपर होगा। सो लुक एट दिस नोब इज एक्चुअली फ्रॉम ब्राजील। तो यहाँ आकर साउथ इक्वेटोरियल करंट एक मर्ज होकर काउंटर इक्वेटोरियल जाएगा, ऊपर जाएगा, एंड द रिमेनिंग विल मूव टुवर्ड्स इट्स साउथ आज ब्राजील करंट, ये ब्राजील करंट है। तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आ रहा है इधर से, वो डंडा है, वो ऐसे जाएगा, इट विल मूव टुवर्ड्स इंडियन ओशन, इट विल मूव टुवर्ड्स पैसिफिक ओशन, वो आएगा, इसमें ये मर्ज होगा दिस ब्राजील करंट, एंड वो यहाँ ठंडा पानी आ रहा है तो इट विल मूव एज कोल्ड करंट्स। बाद में ये जो यहाँ आता है, जो इंडियन करंट्स में एक तो इधर आएगा, एंड ये नोब है, दिस इज केप ऑफ गुड होप ना, ये एंड, तो इधर इसका स्प्लिट होगा, एंड वन विल मूव, यहाँ बेल्जियम है, सॉरी बेंगोला है, दिस विल मूव एज बेंगोला करंट यहाँ से ऊपर, and this is actually the cold current, again this will meet to south equatorial current। तो यहाँ भी एक साउथ अटलांटिक गियर बन गया है, असली में सब ट्रॉपिकल साउथ अटलांटिक गियर बनेगा। So this is the movement, current movement in the Atlantic Ocean. So major currents are north equatorial current, south equatorial current, counter equatorial current, Gulf Stream, Labrador current, Greenland current, Norwegian current, North Atlantic drift, and the Canary current. And in southern side, south equatorial current, Brazilian current, west wind drift, then Benguela current. And finally, the Indian Ocean. Indian Ocean में there will be inversion of currents happen at Indian Ocean. इसका southern side में तो southern hemisphere में उतना ज़्यादा changes नहीं है, but on the other hand, in northern side, as the land, as the water body is locked with land, सब area में land है, and there is influence of monsoon as well. यहाँ क्या है? There is change in the direction of the currents in Indian Ocean, especially in the northern hemisphere. If you look at this is the equatorial region, center region है India, अभी 8 डिग्री में है ना, तो almost 0 डिग्री latitude यहाँ होगा। यहाँ से क्या होगा? There is an equatorial current, यहाँ से एक equatorial current जाना था, but equatorial current is not moving at the equatorial area. It is moving from east to west, near to the coastal. जो coastal area इंडिया को जो boundary से जो पूरा cover करके ये आ रहा है. This is happened in winter season. That is usually November, December, January season में ऐसा movement current का होगा. From east to west इसका movement. The equatorial current, which has to be moved along the or parallel to the equator, will move through the Bay of Bengal and the Indian Ocean from east to south, east to west direction. That current we can say it as northeast monsoon current, because this is the time of northeast monsoon. October, November, ये northeast monsoon का time है. तो विंड का मूवमेंट भी यहाँ से ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड तक है. तो यहाँ क्या हो गया? ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड इसका मूवमेंट हो रहा है. एंड ऑन द ऑपोजिट साइड ड्यूरिंग समर सीजन क्या हो गया? जून, जुलाई, अगस्त, ये सीजन में क्या हो गया? देयर इज साउथ वेस्ट मानसून. तो इक्वेटोरियल मूवमेंट
इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का मूवमेंट कैसे होगा? दिस विल मूव फ्रॉम west to east. This will move from west to east through Bay of Bengal and Indian Ocean. Sorry, through Indian Ocean and Bay of Bengal. Equatorial current ऐसे नहीं जाएगा. It will move along the coast. ऐसे जाएगा. And that current is called the southwest monsoon current. तो ये याद रखना है. Winter season में there is northeast monsoon current and summer season में there is southwest monsoon current. ये दोनों warm currents है. There is no cold current there. And on the other hand, if you look in the southern, दोनों में same है. दोनों side में इसका movement same है. ये तो कैसे होगा? यहाँ ऐसे नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट होगा, साउथ वेस्ट मानसून. इसके ऑपोजिट देयर इज काउंटर इक्वेटोरियल करंट फ्रॉम ईस्ट वेस्ट टू ईस्टर्न साइड में. इसका काउंटर इक्वेटोरियल करंट होगा ऑलवेज इन द सदर्न हेमिस्फीयर. इसके नीचे हो गया हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट. अभी इसमें देखो दोनों में साउथ इक्वेटोरियल करंट है, तो यहाँ से बाकी सब ठीक ही है except the counter equatorial current and northeast monsoon current and southwest monsoon current. The remaining is same. So south equatorial current is moving from eastern side to western side. ऐसे आ रहा है. This is Madagascar ना, Madagascar island है. तो Madagascar island में ये split होगा. One move as Mozambique current. So this is Mozambique area. So इसके अंदर से जो आ रहा है that is called Mozambique current. This is actually Madagascar. Madagascar और अफ्रीका के बीच में जो आएगा that as Mozambique current. दूसरा आएगा यहाँ ये इस साइड में and it will merge as 𝐬𝐴GUL-HAS current. 𝐬𝐴GUL-HAS current बोल के ये merge होगा इधर. Again नीचे आ गया तो कुछ फायदा नहीं है. वेस्टर्न विंड ड्रिफ्ट ने इसको तो उड़ा के ही जाएगा. सब करंट को ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट उड़ा के जाएगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्टर्न साइड तक. एंड दैट इज एक्चुअली कोल्ड करंट. बाकी रिमेनिंग तो वार्म करंट है यहाँ तक. इसको तो लेके जाएगा एंड इट विल रीच द वेस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इट विल मूव. वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ऐसा जाएगा एंड द रिमेनिंग जाएगा टुवर्ड्स द इक्वेटर. इक्वेटर साइड में जाएगा. as it is western side, it is known as the Western Australian current. So Western Australian current is in Indian Ocean and Eastern Australian current is in Pacific Ocean. So ये याद रखना है. So this is how it is moving. And these are the major currents that is occurring on the planet. क्या क्या है? Ocean currents in Pacific Ocean, Atlantic Ocean and Indian Ocean. When you are studying this, keep an atlas or map of the world with you. Then you can easily understand the name of the current, from where it got its name. Usually the name is getting from the countries nearby that particular current. That's about the current. On next class, we can discuss about the waves. इस एरिया में कुछ डाउट है?